Hello students, in this lecture we are going to discuss about an important topic in cell biology which is known as cytoskeleton. And the word cytoskeleton, as it indicates that it is a skeleton or a skeletal structure, or it's a supporting structure inside the cytoplasm. So as the definition clearly indicates to us over here, that it is an intracellular network of protein filaments. So this is an important word, that it's an intracellular network of protein filaments present in the cytoplasm of a cell. And let me tell you, cytoskeleton काफी common होते हैं, and they are more predominant in case of the animal cells, since the animal cells do not have a rigid cell wall. प्लांट सेल के पास तो एक रिजिड सेल वॉल होता है जो उनकी शेप मेंटेनेंस में मदद करता है, and plant cells also do not migrate, but animal cell on the other hand, they migrate and undergo a lot of stress, or let's say a shear during their movement, be it along the blood vessels or during different systems. So animal cells keep on moving, तो उनका shape maintenance during motility and even during movement में उनका cytoplasm में fine filaments, protein filaments present होते हैं, जिनको cytoskeleton collectively कहा जाता है. तो if you look at these different fibers or different protein filament, they are just present below the plasma membrane, right? So these particular filament like structure which are located over here, they can be considered as the cytoskeletal elements, and they actually help in the motion or the motility of the animal cell, as well as in maintaining the shape of the animal cell. अगर हम बात करेंगे protein filaments की या cytoskeletal elements की, तो they are basically made up of small protein subunits which are joined by non-covalent interactions, right? So the protein filament जिनकी हम बात कर रहे हैं कि cytoskeleton filaments के बने होते हैं, उन filaments की भी protein subunits होती हैं, right? तो protein filament की subunit जो अब हम आगे चल के देखेंगे, for example microtubule is one type of cytoskeleton जो tubulin protein का बना होता है. तो tubulin में भी subunits हैं alpha beta, which we will see later on, not to worry about that, right? Now the thing is that three main types of cytoskeletal elements are in our syllabus, like microtubules, microfilaments, and the IF or the intermediate filaments. And as you can see on the figure on the right hand side, clearly indicate that microtubules, which is a cylindrical structure, appears over here, made up of tubulin proteins, right? So tubulin subunit is there, microfilament, which is made up of actin, and then we have intermediate filaments. In intermediate filament, we will discuss many examples later on, like lamins, vimentins, XYZ, which will come later on, right? So let us start with the first topic for today, which is known as the microtubules. So microtubules, if we talk about, it's a hollow cylindrical structure approximately 25 nanometer in diameter, and I hope everybody understand that 1 nanometer is in the range of 10 raised to the power minus 9 meters. So they are hollow cylindrical structures, and as you can see on the figure on the right hand side, represent that it's a hollow thing over here, right? So it's a hollow structure, cylindrical in nature, and with the average diameter which is being represented is in the range of the 25 nanometer. So the average diameter is in the range of 25 nanometer. And as you can see, and I told you earlier also, that microtubules are made up of a basic unit called as tubulin protein, right? And in fact, this tubulin protein is made up of two subunits joined together called as alpha and beta. So there's one alpha subunit, one beta subunit. So alpha and beta tubulin together, they make a tubulin dimer unit or a dimer subunit, right? And these units like represented over here. So multiple tubulin, right? Multiple tubulin are joined together to form a particular microtubule, and we will understand how this arrangement is done, right? So don't worry about that. So, but the alpha and beta system joined together forms one tubulin heterodimer found in all eukaryotic cell. Then the next point is about their roles. So they can play important role in cell shape determination as well as the cell motility. Coming on to basic unit, as I told you earlier, the basic unit is a tubulin protein, and tubulin protein is made up of two further subunit called as alpha and beta tubulin, or let's say tubulin are of two types called as alpha tubulin, beta tubulin. Now, another interesting thing, this is very important information for your CSIR examination, be it in the part B or part C level, that the tubulin
protein is having how many GTP binding site? So it has two GTP binding site, and one GTP site is located on both of them. That is one on alpha tubulin and the other on the beta tubulin, right? So we have GTP binding site present on both of them, but the GTP present on or which is bound to alpha tubulin, it is not hydrolyzed. It is not broken down into the GDP. On the other hand, the tubulin which is bound to beta tubulin, it gets easily hydrolyzed, right? So it gets easily hydrolyzed into the GDP. So I'm going to repeat this particular thing once again, that the two GTP subunits are there on alpha and beta, each one subunit each, but the hydrolysis is mainly associated with the GTP bound to the beta tubulin. So most of the times you can see that there might be the hydrolysis of the GTP associated with beta tubulin, but never of that the one which is associated with the alpha tubulin. Now, this is another important point which you should remember for the examination, that tubulin proteins are always associated with something very important, an important term for your exam called as MAP, or the microtubule associated proteins, which control and determine the microtubule function. So they play a very important role in regulating the microtubule function, and we are going to understand about the MAPs. So the MAP is going to be the next in this lecture. So the microtubule associated protein. If you look at this particular picture, you can see that apart from the alpha beta tubulin heterodimers, there are certain filaments which are seen binding on the this particular microtubule system. And one of the best example of the microtubule protein, as you can see, is a protein called the tau protein. Plays a very important role in the microtubule organization. So therefore, tau protein becomes an example. It's an example of a microtubule associated protein. So you can see that it's associated with the microtubule, and it is not a part of the tubulin, but it is associated on the surface of this alpha beta tubulin system. So what can be the possible role of the MAPs? Regulation of microtubule polymerization. Then we have organization of microtubule array, that is organizing the microtubule arrays. Then we have intracellular interaction, or let's say interaction of the microtubules with other cellular component. So microtubule polymerize होना यानी tubulin unit जुड़कर microtubule बनना, ये एक important role है MAPs का. Microtubules के array forms हो जाए जो बाद में आगे चल के कई role play करते हैं, even in spindle fiber association we will understand that thing, and interaction of microtubules with other cellular components. So moving ahead in this lecture, now we need to understand about the microtubule structure. Very important point, lot of questions can come from this particular area. So as I told you that microtubule basically consists of the alpha beta tubulin heterodimers arranged in head to tail fashion. We will very soon understand what is the meaning of head to tail fashion. So if you look at this particular hand-drawn figure, which I've represented for you, what I'm trying to say is that the tubulin heterodimer is basically made up of one alpha plus beta. जब बहुत सारे ट्यूबुलिन के हेटेरोडाइमर एंड टू एंड जुड़े, राइट, जब बहुत सारे अल्फा बीटा के जो ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर हैं, when they are going to be joined together, then it results in the formation of a structure which is called as the protofilament, right? And most important thing, that one of the end which is facing this particular alpha thing, this is called as the minus end. मतलब minus end वो end है जहां पर alpha subunit exposed है, और वो end जहां पर beta subunit exposed है, that is actually called as the plus end. We will very soon understand the meaning of this plus and minus also. This plus is sometimes also called as the fast growing end, while the minus end is also called as the slow growing end. We will understand about this thing. तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो एक प्रोटोफिलामेंट बनता है, यानी कि प्रोटोफिलामेंट को अगर कोई डिफाइन करना चाहे, सो इट्स अ लीनियर एरे ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स, राइट? अच्छा, यही प्रोटोफिलामेंट, अब ये एक प्रोटोफिलामेंट है, ऐसे 11 से 15, कम से कम 11 और 15 तक भी जा सकता है, इनफैक्ट 11 से कम 10 भी हो सकते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से 11 से 15 एक एवरेज वैल्यू है, बट सबसे कॉमन वैल्यू अगर कोई पूछता है तो सबसे कॉमनली 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़कर एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिलेंडर बनाते हैं, राइट? सो एज यू कैन सी इन दिस हैंड ड्रॉन फिगर,
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने स्टार मार्क से यहाँ पर लगाया है कि ऑल प्रोटोफिलामेंट्स इन अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑलवेज जॉइन इन अ पैरेलल फैशन। ये क्वेश्चन सीएसआर ने कई बार पूछा हुआ है। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो इट एज अ करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पैरेलल फैशन क्या है? दे आर ऑलवेज जॉइन सच दैट द प्लस एंड ऑफ ऑल प्रोटोफिलामेंट, जितने भी हैं, यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ फ्रंट फेसिंग दिखाई है, तो पूरा एक सर्कल है, राइट? दिस इज अ कंप्लीट सर्कल, राइट? सो यहाँ पर आपके पीछे की तरफ बैक साइड भी होंगे जो आपको नहीं विजिबल है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि 11 या 15 प्रोटोफिलामेंट जुड़कर एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिलेंडर बना सकते हैं, बट सबसे कॉमनली 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़कर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का। ये सबसे कॉमन वैल्यू है। और वो प्रोटोफिलामेंट्स 13 हो, 11 हो या 15 हो, हमेशा इस प्रकार से अरेंज होंगे कि सबका प्लस एंड एक तरफ फेस करेगा, यानी बीटा, जो लास्ट वाला बीटा है वो एक साथ अरेंज है, और जो माइनस एंड जहां पर अल्फा एक्सपोज्ड है वो हमेशा एक तरफ आपका पॉइंट आउट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल हेड टू टेल फैशन दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग। Now there comes an important information जो मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, and this can be an important information in the part CCSR questions, right? So यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? The end where alpha tubulin is exposed, यानी कि वो एंड जहां पर अल्फा ट्यूबुलिन एक्सपोज्ड है, जिसको आप माइनस एंड के नाम से भी जानते हैं या माइनस एंड भी बोलते हैं, इट ग्रोज स्लोली इन विट्रो। जब लैबोरेटरी में इसकी पॉलीमराइजेशन देखी गई है तो काफी स्लो ग्रो करता हुआ दिखता है, जबकि जो ऑपोजिट एंड है वेयर बीटा ट्यूबुलिन फेसेस इनटू द सॉल्यूशन, वहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसकी लेंथ रैपिडली बढ़ती है। तो इसे प्लस एंड को इसलिए फास्ट ग्रोइंग एंड भी कहा जाता है। तो द प्लस एंड इज आल्सो कॉल्ड एज द fast growing end, whereas this particular alpha exposed or minus end is also called as the slow growing end. एंड दोनों ग्रो करते हैं लेंथ में, बट एक को फास्ट ग्रोइंग एंड बोला जाता है, दूसरे को स्लो ग्रोइंग एंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इस तरीके से, वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी सून। देखिए, ग्रोथ दोनों जगह है। बोथ माइक्रोट्यूब्यूल एंड्स कैन स्विच बिटवीन फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड श्रिंकेज। मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि किस प्रकार से अगर जीटीपी लगा रहे और या जीटीपी बाउंड है तो आपका वो सब यूनिट वहां से टूटेगा नहीं, वो एंड पर जुड़ा रहेगा। और अगर जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई, जैसे बीटा का हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो वहां से सब यूनिट ब्रेक करना शुरू कर जाएगा, जिसको हम श्रिंकेज भी बोलते हैं। तो ये फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड श्रिंकेज हैं व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो बोथ माइक्रोट्यूब्यूल एंड्स कैन स्विच बिटवीन फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड श्रिंकेज, अ प्रोसेस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द जीटीपी हाइड्रोलिसिस एंड बीटा ट्यूबुलिन। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अल्फा पे लगा हुआ जो जीटीपी है वो कभी हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि बीटा पर लगा हुआ जीटीपी can get hydrolyzed into GDP, राइट? कैन बोला है, हमेशा नहीं है। अगर उसका बीटा ट्यूबुलिन का लगा हुआ जीटीपी हाइड्रोलाइज नहीं हुआ तो वो बीटा वहीं जुड़ा रहेगा, और यदि हाइड्रोलाइज हो गया तो ये बीटा आपको सेपरेट होता हुआ दिखेगा, यानी टूटता हुआ दिखेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नाउ the next thing that which we are going to understand is the microtubule types. Microtubule के कितने टाइप हैं या कितने प्रकार हैं, right? Now if we look at the microtubule types, there are basically three different types. One is called as singlet microtubule, the second one is called as doublet microtubule, and the third one is called as the triplet microtubule. So singlet, doublet and triplet. Singlets are very rare, डबलेट्स आर कॉमनली फाउंड इन सीलिया एंड फ्लैजिला, आप पढ़ते आए बेसिक क्लासेस से। और ट्रिपलेट आपको बेसल बॉडीज में मिलते हैं, बेसल बॉडीज ऑफ द फ्लैजिला भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल आपको सीलिया और फ्लैजिला के बेसिकली एक्सोनीम एरिया में मिलते हैं, राइट? तो अगर आपने बेसिकली पढ़ा होगा सीलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करें, तो सीलिया और फ्लैजिला में देयर इज वन पार्ट ऑफ द सीलिया और द फ्लैजिला which is actually protruded out of the membrane, and if you look at the cross section it is also called as the exoneme. But there is another part which is actually embedded into the membrane, which is often called as the basal body. So cilia हो या flagella हो, जितने भी membrane extensions हैं उनमें आपको एक extended well extended portion दिखता है, जिसको हम basically exoneme भी बोलते हैं, right? And the part which is embedded inside the plasma membrane, that is typically called as your basal body. तो आपके exoneme की हम बात करते हैं तो उसमें आपको डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, राइट? बेसिकली वहां पर आपका डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। और ट्रिपलेट जो आपको मिलता है वो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला में मिलता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया प्लस फ्लैजिला में आपको मिलता है, साथ ही साथ सेंट्रियोल्स में देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि अंतर क्या है। देखिए, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको
जो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है वो एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल है, राइट, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल, इट्स अ कंप्लीट ट्यूब्यूल। मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने में 11 से 15 माइक्रोफिलम प्रोटोफिलामेंट्स लग सकते हैं, बट सबसे कॉमन वैल्यू को कभी मत भूलिएगा। 13 प्रोटोफिलामेंट्स का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे आप कंप्लीट कंसिडर करते हैं। तो कंप्लीट ट्यूब्यूल है, आपको दिख रहे हैं कितने प्रोटोफिलामेंट्स हैं, उन सिलेंडर्स का सिर्फ टॉप पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर ओनली एबल टू सी the topmost portion or the topmost part of that particular area. So singlet जो microtubule है वो complete microtubule है because they are made up of 13 protofilaments. They are made up of what? They are made up of 13 protofilaments, right? Doublet में आप क्या देखते हैं? There are two types of microtubule. One is a complete one and the other one is incomplete, right? So the complete one is called as A because उसमें आपको 13 दिख रहे हैं पूरे, and the incomplete one is called as the B जिसमें आपको सिर्फ 10 दिख रहे हैं। तो जिसमें कंप्लीट है उसमें 13 है और जिसमें इनकम्प्लीट है उसमें 13 से कम कोई भी नंबर हो इनकम्प्लीट बोलना पड़ेगा आपको, राइट। सो दिस A प्लस B, दिस इज अ डबलेट, और डबलेट में हमेशा एक कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। तो दिस इज द कंप्लीट वन and this B is the incomplete one. So one is the complete one and the other one is the incomplete one. I hope you understand. ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल में आपका एक कंप्लीट है और दो इनकम्प्लीट है। सो वन इज कंप्लीट while these two are incomplete, right? I hope that makes sense. So this is called as triplet microtubule. So moving ahead after that, ये हमारे हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स के टाइप। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, एक टर्म जो सीएसआईआर बार बार अपने पार्ट बी के एरियाज में टारगेट करता है, which is called as the MTOC or microtubule organizing center. So what is MTOC basically? Microtubules in a cell वो आपको हमेशा एक क्लस्टर या बंडल में अरेंज मिलेंगे, which is also known as the MTOC, microtubule organizing center. During interphase, it is interesting कि MTOC हमें कहाँ लोकेटेड मिलता है। So during interphase, the MTOC is located towards the outer surface. This is important question. Part B या Part C कहीं पर भी आ सकता है। So during interphase, the MTOC is located towards the outer surface of the nuclear envelope. As you can clearly see over here, तो आपके लिए MTOC का अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ है। You can see that towards the outer side. I hope you can see that there is a center, right? यहाँ से आपके बाकी जो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का इनिशिएशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा। सो देयर इज अ सेंटर कॉल्ड एज द एमटीओसी जहां से आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की इनिशिएशन दिखती मिलेगी, और ज्यादातर इंटरफेस में ये आपको न्यूक्लियस के पेरिफेरी पर अरेंज मिलता है जहां से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे, राइट। Another important thing in animal cells, MTOC contains a pair of centrioles called as centrosome. ये बात आपको बेसिक सेल बायोलॉजी क्लास 11th से पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में एमटीओसी के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल मिलता है, राइट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड these two centrioles. So when two centrioles are almost at 90 degree angle to each other, so when two centrioles are almost at 90 degree angles to each other, this particular thing is called as the centrosome. So ये आपको एसोसिएटेड दिखता है किसमें, एनिमल सिस्टम में या एनिमल सेल्स में। जबकि प्लांट सेल में बात करें तो उनके एमटीओसी में कोई सेंट्रियोल नहीं है और ना ही सेंट्रोसोम मिलेगा। तो एमटीओसी दोनों जगह है, चाहे वो एनिमल सिस्टम हो या प्लांट सिस्टम हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ने बोला था कि साइटोस्केलेटन तो एनिमल सेल में है, मैंने ये नहीं कहा कि प्लांट सेल में नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेल डिवीजन में जरूरी होते हैं वो सेल डिवीजन तो आपको प्लांट सिस्टम में भी होगा, स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट वहां पर भी होंगे, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का वहां पर भी रोल है। बट जो एसेंशियल साइटोस्केलेटन की जरूरत है या ज्यादा प्रेडोमिनेंस है वो आपको एनिमल सिस्टम में मिलेगी, राइट। मूविंग अहेड आफ्टर दैट, this particular point is a very important information for the part C level of the question. So at MTOC the orientation, MTOC पर ओरिएंटेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमेशा इस प्रकार होता है that minus end is embedded into the MTOC while plus end is always away from it. This question can definitely be asked, and for this particular thing I am going to represent a figure for you, right? So अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम यहाँ पर है MTOC है। MTOC में आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इस प्रकार एम्बेडेड होंगे कि हमेशा जो माइनस एंड है, राइट, वो माइनस एंड आपको एक तरीके से एम्बेडेड दिखेगा। सो ये पर्टिकुलर एंड, तो दो हमारे एंड्स हैं प्लस और माइनस,
सो माइनस एंड जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल का है वो हमेशा एम्बेडेड दिखेगा एमटीओसी में, और प्लस एंड हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी अवे. सो दिस माइनस एंड इज एक्चुअली एम्बेडेड, इट इज नॉट शोन ओवर हियर, बट अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एमटीओसी के अंदर एम्बेडेड है. तो माइनस एंड इज ऑलवेज एम्बेडेड इनटू एमटीओसी while the plus end is always away from it. So this will be all in the part 1 lecture of cytoskeleton, and the next lecture we will be continuing with the more information about MTOC dynamics and the microtubule dynamics. Thank you and see you in the next lecture.